एक्चुअली हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, अदरवाइज काम आ जाती है आपकी. ऑल राइट. सो द नेक्स्ट इज the device primarily used to provide hard copy is printer. Printer. Very right. Again, congratulations. The next question 8. Dot matrix, desk jet, inkjet, and ledgers are all types of which computer peripherals? Printer. 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 Okay, so we mark printer. It's a right answer. The ninth question is, which among the device that convert computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? Teleport. Wrong. Any other answer? The modem. The modem. Right. Correct. A light sensitive device that convert drawing, printed text or other images into digital form. Scanner. Scanner. Scanner is a right answer. Now, what type devices are computer, speaker and headphones? Output. Output. Yes, उन्नति को चांस देते हैं. उन्नति, tell me. The output. Output. And Pratibha? प्रतिभा नहीं है. Very nice. Any other one? Aaron? Sir, Sir, input. Sir, input. अगर हम ये मार्क करें तो इनपुट आउटपुट रॉन्ग आ रहा है. कह रहा है कि द व्हाट टाइप डिवाइसेस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स. इट्स अ आउटपुट जो आपने बताया है. लेजर प्रिंटर बिलोंग टू Page printer. पेज प्रिंटर. इट्स राइट. A joystick is primarily used to for Computer gaming. right, computer gaming. USB refers to A port type. Serial bus standard. A port type. Serial bus standard. port type. Port type is a right answer. Okay, these are similar. किसी के माइंड में आ सकता था कि USB जो होता है वो आपका एक तरह से स्टोरेज भी करता है, क्योंकि USB जो डिवाइसेस होती हैं वो स्टोरेज करती हैं. तो बट यहाँ USB डिवाइस नहीं लिखा है, ओनली USB लिखा हुआ है. प्रोसेसर ये है नहीं. सीरियल बस स्टैंडर्ड इज इट इज अ कंफ्यूजन. ओनली द क्लियर इज अ पोर्ट टाइप. It's a portable device. The space may also be called the screen or monitor. Display. Display. Very right answer. Again, congratulations to all of you. Which of the following group consists of only input devices? Mouse, keyboard, and scanner. Mouse, keyboard and scanner. D option. Very right, Unnati. Now Unnati, give a chance to another one. Who want to take part? Himanshi and Unnati have done a lot of questions. Any other one wants to take part? Any other? Smriti Dash? Pratibha? नहीं. Tashu? Once?
वंस? Yes. वंस की आवाज ही नहीं आ रही है। चलो फिर से चांस फिर इकरा। इकरा, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yes, sir. ओके, सो इकरा को चांस देंगे अब बोलने का। ओके इकरा बताइए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? Sir, input. Right. What type of device? It is a similar question. A barcode reader is an example of Processing device. Processing device. processing Input device. device. Sir, input device. Input device. Okay. First give a chance to Ikra, then we will see. Okay. Now the final answer is input device. Processing is a wrong. आपके सामने है. Speed of the printer is limited by speed of what? By the speed of length of paper. Okay. It's wrong. Okay. Himanshi and Unnati. Cartridge use. Cartridge use. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. वेरी ट्रू. नेक्स्ट, OCR recognize the space of the character with the help of light source. Size. Shape. इकरा, इकरा कहाँ है? Yes, sir. बताओ आंसर बेटा. गलत होगा, गलत के बारे में मत सोचो कि गलत होगा तो क्या होगा. कुछ नहीं होगा. गलत होगा तो केवल गलत होगा और क्या होगा? Sir, size. साइज मार्क किया, रॉन्ग आंसर. अब चांस देते हैं बाकी दो कैंडिडेट्स को. और कोई भी ट्राई करना चाहे? हाँ बोलो. Shape. Shape is a right answer. Next, in MICR, C stand for Character. Character. Sorry, character. एक आंसर कोड आया है, गलत है. एक आंसर कैरेक्टर आया है, कैरेक्टर इज अ राइट आंसर. क्लियर? Yes, sir. Okay. ओके. नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ, मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई रेस नहीं लड़ रहे हैं हम केवल जो आंसर्स आ रहे हैं उनको मार्क करेंगे सो दैट कि बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन सी चीज किसके लिए बनी है. द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड. जो पैटर्न बनता है ना, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके पीछे एक लाइन लाइन सा बना होता है. बार कोड. ठीक है, बार कोड इज अ राइट आंसर. Which of the following produce high quality output? Plotter. Non-impact printer. Non-impact printer. Right answer. 25th question is, the wheel located between the two standard buttons on a mouse is used to Scroll. scroll. All right. Using output devices, one can View or print data. ओके. बाकी लोग भी ट्राई करते रहें. Which of the following is not an example of hardware? Interpreter. Interpreter. Very right. सबने सपोर्ट किया इस आंसर का. That's very good. Device that allow you to put information into the computer. Input. Input. Very right. Devices that let the computer communicate with you. Output. 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 Output devices are only here to help
इन कम्युनिकेशन। जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, जब तक आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं दिखेगा तो आप कैसे समझेंगे कि मशीन ने क्या प्रोसेसिंग की है। सो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू help in communicating with machine. Okay, which of the following is not an output device? Scanner. Very easy question. The most common method of entering text and numerical data into computer system is through the use of Keyboard. Keyboard. okay, right. Information that comes from an external source and is fed into computer software is called Input. okay. The term used to define all input and output devices in a computer system is Hardware. दोनों मार्क करते हैं। सॉफ्टवेयर इज रॉन्ग, हार्डवेयर इज राइट। ओके, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज Keyboard. 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 So this is the test you have given, so we are going to finish this test and we can see how many questions we have done wrong. एक हमने इस पेज में किया है और एक पहले किया था। 3 questions we have done the wrong. Now what is the next task? Hello, see, okay, what is the next task? The next task is these are the questions that you have to attempt in your notebook now. जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे आप उन्हें छोड़ देंगे। In a next class we will discuss the questions. Okay, the question are here. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes. sir. So the questions are, what is the advantage of using plotter to produce a printout? Write 3 facts that comes to your mind about the following terms: ALU, MICR, OCR, hardware and software. Write differences between the followings: flatbed plotter and drum plotter, analog and digital computer. The fourth one is write the advantage and disadvantage of keyboard. The fifth one is write full form of the following terms. So these are the questions that you have to attempt in your notebook. Just try to attempt. If you are not finding the right answer, just write whatever comes in your mind. In a next class, we will discuss the detailed answer of all these questions. Okay, and if possible we will do it today also, but as I can see there are the 15 minutes which is required to attempt these questions, so please start doing so. Are you ready? Yes, sir. All right, बाकी लोग ready नहीं है?